Hello friends and welcome to your YouTube channel iTech World. In today's video, we are going to uh, create another account on your favorite essay writing website writerslab.com. In the same video, we shall pass English grammar test in this live session to get our account approved. Let's get started. Here we have got this. I have already attempted all the basic particulars and now we have landed on the test section and our timer has started. Okay, we have got for almost 14 minutes to attempt this test. Let's start attempting this test of English grammar. What a lovely material, it feels like silk. In this question, the very first question, we have got option A as the best choice. Okay, let's move to the question number 2. I'm leaving this damn city. As for Howard, I do not care what happens to him. Move to the next question. It was a very thrilling match. England won with 3-2 with a goal in the last minute. Let's move to the question number 4. Read a paragraph and choose a sentence that describes it best. On the way across the Aegean Sea, Caesar was kidnapped by pirates and held prisoner. He maintained an attitude of superiority throughout his captivity. The pirates demanded a ransom of 20 talents of silver, but he insisted that they ask for 50. After the ransom was paid, Caesar raised a fleet, pursued and captured the pirates before imprisoning them. He had them crucified on his own authority, and he had promised while in captivity a promise that the pirates had taken as a joke. Okay, let's try to find out best choice from these given four sentences. Caesar was a vain man who thought 20 talents is too little of a ransom. This is not the suitable choice. Let's move to the next one. Caesar was very brave and kept to his word to kill the pirates. This is the most appropriate option for this question. Okay, इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सबसे ही मौजू है. तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. Let's move to the question number 5. We have got again the passage. Let's read out the passage to find out the best choice here. When most people imagine an archetypal desert landscape with its relentless sun, rippling sand, and hidden oases, they often picture the Sahara. But 11,000 years ago, what we know today as the world's largest hot desert would have been unrecognizable. The now desiccated northern strip of Africa was once green and alive, poked with lakes, rivers, and grasslands, and even forests. So, where did all that water go? The Sahara has long been subject to periodic bouts of humidity and aridity. These fluctuations are caused by slight wobbles in the tilt of Earth's orbital axis, which in turn changes the angle at which solar radiation penetrates the atmosphere. At repeated intervals throughout Earth history, there's been more energy pouring in from the sun during the West African monsoon season, and during those times, known as African humid periods, much more rain comes down over North Africa. Okay, let's try to find out the best choice from these given four sentences. Changes in Earth's axis cause the changes of Sahara climate. This is the best choice. Okay, let's move to the next question. We have again got the passage. Okay, let's try to read out this passage to find out the best choice here. Read the paragraph and choose a sentence that describes it best. People have considered the possibility that the missing colonist could have assimilated into nearby Native American tribes since at least 1605. If this integration was successful, the assimilated colonists would gradually exhaust their European supplies, that is, ammunition, clothing, and discard European culture, that is, language, style of dress, agriculture,
As Algonquin lifestyle became more convenient, colonial era Europeans observed that many people removed from European society by Native Americans for substantial periods of time, even if captured or enslaved, were reluctant to return. The reverse was seldom true. Therefore, it is reasonable to postulate that if the colonists were assimilated, they or their descendants would not seek reintegration with subsequent English settlers. Okay, let's try to read out all of these options and find out the best choice here for this question. The English colonists most certainly assimilated into Native American tribes, leaving their culture behind. This is not suitable. Let's move to the next one. The Native American culture is superior to English, as a little few Englishmen returned once assimilated. This is not the best choice either. Let's move to the next one. The English colonists assimilated with Native Americans because their supplies of cloths, ammunition, etc. exhausted. This is the best choice for this paragraph. Okay, let's move to the question number 7. This picture, previously entitled Outskirts of Village, probably depicts a scene from the artist's hometown in France. Okay, option C is the best choice here for this question. Okay, इसमें ऑप्शन सी आएगा जी, देख ले अच्छे से. Let's move to the next question. Would you know how to act if your wife went into labor? This is quite easy. Option D is the best choice for this blank. Okay, इसमें ऑप्शन डी आएगा जी. आगे चलते हैं जी. I hate being here. All the money in the world won't make me stay in this city. Okay, option A is the most suitable choice here for this simple blank. Okay, for this sentence, option A is the most suitable option. Is that clear? Okay, let's move to the next question. The walk was exhausting. I need a good rest now. This is quite easy. इसमें कौन सा आएगा जी? Option A. Let's move to the next question. Pick a correct sentence. Uncle Matt and Mr. Okay, इसमें start पे ही एक mistake हो गई है. This sentence contains a mistake here, so this is wrong. Let's move to the next one. This sentence seems to be correct. Anyhow, try to read out the rest of the option as well. Being in danger activates our fleeing reflexes. I at how always disagree. Okay, okay. Just have a look here. In this, for this question, we have got option C, the best suitable choice here. Okay, obviously, in this question, we have got two sentences correct. Okay, इसमें दो sentences ठीक है, याद रहे. लेकिन मैंने बार बार ट्राई करके देखा है, ये सेंटेंस भी ठीक है, ये भी. अगर हम इसको टिक करेंगे तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा. तो ये चूंकि ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट आपको एक एल्गोरिथम के थ्रू, उसको कंप्यूटर के थ्रू उसका रिजल्ट जनरेट होता है. तो इसमें हालांकि इसमें दोनों ऑप्शन ठीक हैं, याद रहे, लेकिन आप इसको जब आप टिक करोगे तो आपका 100% एक्यूरेसी से टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा. तो लिहाजा बेस्ट ऑप्शन यही है जी. हालांकि ग्रामेटिकली दोनों सेंटेंस ठीक है, दोबारा सुन लें, लेकिन आपने इसको ही मार्क करना है. ओके, for this question we have got these two sentences right, correct, but we have to select this one to get 100% marks. Okay, is that clear? Don't forget to mark option C here. Try to read out this sentence once again. You may find different order in the next test. Okay, इसका तरतीब डिफरेंट हो सकती है, लेकिन सेंटेंस यही होगा जी. ये आपने मार्क करना होगा, तभी जाके टेस्ट ठीक होगा. इसलिए बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे कंफ्यूज होते हैं, बार बार टेक्स्ट करके पूछते हैं. तो ये भी हालांकि ठीक है, इसको नहीं करें मार्क, इसी को करें. ओके, याद रहे, इंशाल्लाह टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. चूज अ करेक्ट सेंटेंस. आई हैव नो quarrel with him all that he left me. My mom's no gods. I will fly with you when you are brave enough. ऑप्शन डी इज द बेस्ट चॉइस हियर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, इसमें सबसे जो एक्यूरेट सेंटेंस है वो ऑप्शन डी है, याद रहे. ओके, all in all, I can say that the dinner was a complete disaster. All in all, option A is the most suitable and appropriate option.
सबसे मौजूद ऑप्शन कौन सा है जी? ऑल इन ऑल। इसको आपने मार्क करना और किसी को नहीं करना, देख ले अच्छे से। इंशाल्लाह आपका टेस्ट जरूर पास होगा, फिक्र नहीं करें आप। नेक्स्ट भी जब भी अटेम्प्ट लें, वही क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार, तो आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देख लें जिसमें मैंने बहुत बहुत सारी आंसर कीज प्रोवाइड की हैं। तो आप, मुझे नहीं समझ आती क्यों आप कंफ्यूज हो जाते हो और परेशान हो के मुझे बार बार टेक्स्ट करते हो। ये आपके लिए ही मैं बार बार वीडियोस क्रिएट करता हूँ, तो ट्राई किया करें प्लीज। ओके। A mugger is someone who breaks into other people's houses and steals from them. I need to buy a new, none of the above. Let's check the time. Okay, मैं आपको ये थोड़ा सा समझा दूं, अभी 4 मिनट पड़े हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे none of the above आएगा। I need to buy a new pair of jeans होना चाहिए था, इसको प्लूरल। तो मैं कभी किसी और वीडियो में आपको समझा दूंगा क्यों ऐसा होना चाहिए था। ये भी रॉन्ग है, सम जीन्स भी नहीं आएगा, जीन्स अकेला भी नहीं है, और ये लिहाजा इसमें से कोई भी ठीक नहीं है, तो ऑप्शन डी आएगा। ओके, ऑप्शन डी इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। ओके, तो लेट्स प्रेस द बटन टू चेक द रिजल्ट। होपफुली, रादर डेफिनेटली यू विल पास योर टेस्ट। Congratulations in advance. Let's press the button to check our result. Okay, submit and let's check the result. You will definitely pass your test. Congratulations in advance. Congratulations, you have successfully passed the English test, English language test. The next step, okay, ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं अगेन आपको बता दूं, मैंने ये कमोबेश थर्ड वीडियो क्रिएट की है राइटर लैब के लिए। आई थिंक 5वीं वीडियो है। मैंने कंसेक्टिवली 3 टेस्ट आपको लाइव सेशन में पास करके दिखाए हैं। मुझे नहीं समझ आती, मेरे बहुत सारे दोस्त क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं और मुझे बार बार टेक्स्ट करते हैं। मेरा तो दिल करता सबका ही अकाउंट क्रिएट कर दूं सबके लिए, लेकिन अनलकीली मेरे पास टाइम नहीं होता। समझने की कोशिश करें प्लीज। तो मैंने टीचिंग भी करनी होती है, मैंने ऑन डिफरेंट ऑलमोस्ट 3 साइट्स पे मैं राइटिंग का काम करता हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं होता। तो मैं बड़ी मुश्किल से भाग दौड़ करके आपके लिए वीडियो क्रिएट करता हूँ। तो मैंने व्हाट्सअप नंबर तो दिया था आपकी आसानी के लिए कि आप फ्यूचर में कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर करें। तो आप बहुत सारे मुझे दोस्त बार बार टेक्स्ट करके टेस्ट पास करने का कहते हैं। मेरे भाई, आप ही के लिए वीडियोस बार बार मैं क्रिएट करता हूँ। आपको मैंने डिफरेंट वीडियोस में बहुत सारी की आंसर कीज, बल्कि तमाम की तमाम आंसर कीज प्रोवाइड की हुई हैं। आप वीडियोस प्रॉपरली वॉच किया करो। वीडियोस वॉच करके आप आसानी से क्लियर कर लो। मैं आपके सामने ऑलमोस्ट 3 टेस्ट मैंने क्लियर किए जी। हमने कंसेक्टिवली 3 टेस्ट हमने लाइव सेशन में पास किए हैं आपके सामने। तो यही मैंने वहाँ कीज दी हुई है, उसमें कंफ्यूजन जो थोड़ी सी बता दी आपको। तो नेक्स्ट किसी एक वीडियो में मैं आपको जहाँ जहाँ कुछ अबहम है उसको हम क्लियर करेंगे। इंशाल्लाह आप 100% एक्यूरेसी से टेस्ट क्लियर करोगे। फिर भी अगर समझ नहीं आती तो हम विद इन 2 or 3 days वी आर गोइंग टू कंडक्ट लाइव सेशन फॉर ट्रेनिंग। In after getting only 2 months training, you would be able to get through every type of test on writing websites. Okay, and you would be able to write every type of research paper, essays, okay, and other type of articles and papers. Okay जी, तो हम 1 या 2 दिन में हम एक लाइव ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो पेड है, लेकिन मेरे जो पाकिस्तानी दोस्त या कोई ऐसे दोस्त जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको बिल्कुल फ्री में उनको एक्सेस दी जाएगी। ओके, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दीजिएगा अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर तो कर सकते हैं तो आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर अनलकीली हमारा कोई भाई फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उसको हम यकीनन सपोर्ट करेंगे। वो हमें बिल्कुल सेपरेटली मुझे इनबॉक्स में या उसमें टेक्स्ट में मुझे बता दे, उसको मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो हम जब क्लास का सेशन शुरू होगा तो उसमें ट्रेनिंग वो फ्री में ले सकता है। ओके जी, विश यू ऑल द बेस्ट।